नमो भगवते वासुदेवाय। एकचत्वारिंशध्याय शिशुवासो शुभशस्तैषु भवान् दर्शयित्वा जले बपु भूयो समाहर्वृक्षो नैत्य विमात्मनः शुभसन्दरितं विख्यो जलादृशेषु सत्तरो कृतदाभिषेकं सर्वं विस्मृतो रथमागमत्। तमस्वी सन् ऋषिकेशो किं ते दृष्टिमागतं भूमौ वियतितो ये वा तथा त्वं लक्ष्यामहे। यक्रुवासो अद्भुतानि ओजावन्ति भूमौ विघ्नति वा जले त्वयि विश्वात्मके विश्वं तानि ते मे स विगतपश्यत। दत्ताद्भूतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तां त्वामपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टाम्यद्भुतम्। इत्युक्त्वा स्वद्यामासु सन्दनं गान्निसूतो मथुरा अन्यत् रामं कृष्णं चैव दिनटये। मार्गे प्रगां बजाराजन् प्रतिष्ठोतरूपागतः वसुदेवसुतो विख्यो प्रीतिं दृष्टं नोचारदो। तावद्ब्रजौकसस्तत्तु नन्दगोपादयो व्रज पूर्वपवनासद्यो प्रतिगच्छो अवतन्ति। तान् समेत्या भवान् अक्रूरं जगदीश्वर गृहीत्वा पाणिना पाणिं पाशयितो प्रसन्निवो। भवान् प्रविशतमग्रे स दानपुरीं श्रियं वयं तिहारापाज्यो पाहं द्रक्ष्यामि पुरीं। यक्रुवासो नामोद्भ्यां त्वरितो प्रविश्य मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्षिमां नाथो त्यक्तन्ते भक्तवत्सला। आगसुजामुग्र्यान्नोचनाथान् पूर्वोषो साग्रजं स्वपालैः सुहृद्भ्यो सुतम। पुनीपादरेशाग्र्यान्नो जमेदिनां च सौन्यसाप्यन्तति साग्नेश्वरा। अवनिजाङ्घ्री मूले गृहाश्वक्यामि श्रीमातुलं लेभे गतिं चैकान्तिनन्तुजा। आपस्तेजोग्रहा अवनिनाशन् लीलोकान् शुचे पुमान् शिरसा धातो सा सर्वो सुदर्जा सगरात्मजा। देवदेव जगन्नाथ पुण्यसवनकृतनो जरुतमश्लोक नारायणं नमस्तुते। वनवासो आयन्ते भवान् भवति गेहामासुतमासो जराचक्रूरकं हत्वा बीतरित्यो श्रीप्रियं विशुभासुयुतो भवान् स्वक्रूरो भीमनायव पुरीं प्रविष्टो कंसायो कर्मवध्यो विहङ्गतो। अथोरात्र अथोपरान्ते भवान् कृष्णो सङ्कर्षणान्वितो मथुरा प्राविशद् गोपैर्दिख्यो परिवारित ददस्तां साटीक तुङ्गगोपुरद्वारां वृषध्येकमिपत तोरणा तं राधकृष्णां परिघाटूरामुदान्नर न्योपशवनो पशुभिता सुवर्णशृङ्गात् कमर्म्यानि निष्कृते शूनि सवार्जितै भवै निरूपयिताधिता। वैजुर्यवज्राननीलविद्रुमयी विद्रुमयी मुक्ता हरिभिः वरवैश्वीरीषु जुष्टेषु शालालां मुखरन्ति करिमुखामुखारविन्दीनां अशिरक्षानापरदां प्रकीर्णा मल्याङ्कुलाजतण्डुलाम् आपनुकुम्भैरचन्द्रखितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपत्नवैः सम्भृतरम्भाक्रमुकैः सुकेतुभिः सलङ्कृतद्वारं सुपट्टिकैः। तां समृविष्टो वसुदेवानन्दवृतौ वीरसैन्यादवर्पणा द्रष्टुं सवियोदिशा पुरस्त्रियो हर्म्यानि शैवानुरुरु पोषुका। दीपर्जगृहीत वस्त्रभूषणा विस्मितो चैकं जुगला जुगले यथापरा। कृतैका पत्र श्रवणैकपूरा नाङ्कां द्वितीया परां सुलोचनम्। अस्तन्तो एकहस्तत्पैषु स्वस्यया सज्जमाना अग्रतो मज्जना। सपञ्चावुठानि सैन्योन्नीशनो प्रापञ्चो भारुगमातरौ। मनांसि तासाम् अरविन्दलोचनो प्रागलभीरम्भावो विलौकिके। जारुमतवीरेन्द्र विक्रमोति सिंहदेशोलानन्दोत्सवम्। दृष्टामुहुः सूतनया दूतचैतसुरान्तर्फुनस्फीतमरुख्य लब्धमाना। आनन्दामूर्तिपशुवा अदृष्टात्मलोभो धृतपशुषु जहूरन अनन्तर अरिन्दमास। प्रसादशिखरारूढा पृथत्फुल्लोमखमुजा अभ्यावसंसौम्नैः प्रमदा बलकेशवौ। दक्षखटैः शोधपात्रैः सद्गन्धैरभ्युपानि तवार्षु मूर्तिवधो तत्रोदीयतम। ऊषु पौराहो गोप्यरस्तभो किमञ्चरन् महान्ति
जाधीत अनुपैशन्ति नरलोको मोर्षभो रजं कृष्णायन्तं रणकारो गदग्रजो दृष्ट्वा मासुतो वासांसि भक्तन्या प्युत्तमानि च दध्यायु यः समुचिराङ्गो वासांसि चारितो भविष्यति परं श्रेयो दातुस्ते न च संशय सोजारितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतो सखेपं दूषितो प्राहो भृतो राज्ञो सुदुर्मरा ईशानेव वासांसि नित्यं गिरिवनेसरा पर्यन्तो किमुदातु राजन्तभ्य न व्यजुषत जातासु बालसामेवं प्रार्थयति दिविहितां वरन्ति निर्लुम्पन्ति राज्ञा राजकुमारः एवं विघटमार्षु कुपितो देवकिशुतो रजकेशो कराग्रे तरग्रेणु शिरा काया तपतयन् तैषानुजीवितोरग्रे वासोधान् विसृजो दुद्रुवु सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहो अच्युत भसित्वात्मा प्रिय वस्ति कृष्ण संगरस्न त्वया सो शेषामनुताय गोपेभ्यो विसृजो भुवि कानिचित् तरस्तुवाय को प्रीतस्तव्यो अर्वत कल्पता विहित वचन वर्णै सौर्ण्या कल्पैरनुद्ध नानालक्षण भाव एवं कृष्णराम गिरितो सुलंकृतो बालगतो पर्वणीयो सिजेतरो तैष प्रसन्न भो भगवान् प्रादार सारो मातुनो श्रियंत्यो परमां लोकी बलै सर्वदा स्मृतीन्द्रियम् ततो सुदाम्नो भवनं मालकारै सुदग्धतु तौ दृष्ट्वा सोऽसमुत्थाय ननामो श्लेषा भुवि तैर्वासमानियो पञ्चध्याथा नादिभिः पूजां सानु जोचक्रे कृतम्बूल अनुलेपने प्राहो नो षट्को जन्म प्रचञ्चुकूलं प्रभो पितृदेवार्षयो मध्यं तुष्टा जगमनेन वा भवतो किल विश्वेषु जगतो कारणं परम् अवतीर्जांसि नो खेमासु वासु नैवां विषयादिशि सूर्यरां योगनात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोऽप्य तावाति संवृतां कियो किमत्मवां पुंसो ते कृतोदेशो भवद्भिरद्विजितम् इत्याविप्रीतो राजेन सुदामा प्रीतमानना सन्ते सुगन्धैर्कुसुमैर्माला विरचितारिदौ ताभिसलङ्कृतो प्रीतो कृष्णनामो सानुभौ प्रणतायो प्रपन्नायो ददतुर्यौ रटो वरान् सोऽपि बभ्रे अचलां भक्तिं तस्मिन्ने अखिलात्मनि तद्भक्तेषु सोऽसौहृदं भूतेषु सोऽदयां पराम् इति तस्मै वरां दत्त्वा श्रियमञ्चादर्शं बलमायुः कान्तिं निर्गामो साग्रज इति सिंहाटमापव्यासिकां दशमस्कन्धे पूर्वप्रवेशनामो एकचत्वारिंशदध्यायो स्मृतारहगुणकृष्णप्रजानन् बल हरिबोल हरिबोल। Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva He Nath Narayana Vasudeva नो भगवते वासवादि पारस्मेध्यासु अथो ब्रजनलालपथेन मार्योऽस्ति यो भीताङ्ग बिलपर्णभाजनां बिलोक्यो कुब्जां युगतिं वराननां प्रसन्नो जान्तिं परसन् रसप्रदः का त्वं वरो
वेतदुहानुलेपनं कैशाङ्गने वा कठेष्वसाधुन् दयवायो अरुङ्गविलेपमुत्तमं श्रेष्ठतो नो विप्लावयन्ति सिन्धुवाच दशम्यं सुन्दरो कं सोऽसन्मता त्रिवक्रनामा धनुलेपने कर्मणि मर्भावितं भोजपति निरतिं प्रियं विना जुबाङ्को अन्तर्दलीदर्हति रूपपेशलमाधुर्या सीतालापीखिते धविताचादरौ सान्द्रमुभयो अनुलेपनं तरसारङ्गाभरणे सुवर्णे तीरे शोभने सम्प्राप्तपरभागिनो सुषुताते अतिरञ्जितौ प्रसन्नो भवता कुब्जां त्रिव्यक्याविष्णानां हरिद्धिं कर्तुं मनस्तक्रे दर्शने फलम् पद्भ्यामाक्रम्य प्रपन्डी द्वाङ्गुल्यतानप्यपानिना परिदशिवके अध्यात्मनीव मूदनी नवदच्युतः सा तदर्जुनि सामाङ्गं ब्रेशोनि पयोधरो मुकुन्दस्पर्शना सज्जो भूभू प्रमुदोत्तमा ततो रूपगुणिदारो सम्पन्ना प्राकेशवं उत्तीर्य निवासाजो स्मरन्ति जातरिसमा ये हि वीरो ग्रङ्जामो नोट्वां त्यक्तुं मरिष्यास्वेतयोर्निधायो प्रसीदो पुरुषसभा एवं श्रियासमानं कृष्णो रामेषुपश्यत मुखं विख्यानु गोपानां प्रसन्नमुखावः येषामि ते गृहं शुभ्रो पुंसामार्गवर्णं सारितौर्गृहाणान्नो पन्थानां त्वं परायणं विषयोमब्धा वन्याटं ब्रह्मर्गे वनिपथे नानोपारे बुद्धे सकृतो अर्चिता तद्दर्शनाल्हादो अपरक्षणाविन्दस्त्रिया विष्णुवासकवयो बनमाललेखितमूर्तयो ततो पौरान् भजते मा धनुषु सार्विक्रमं तस्मिन् प्रविशे तद्विषे धनुर्दञ्जामिवाद्भुतं पुरुषै भोविन्द गुङ्यते परधिमं परमाणु नीवे कृष्णं प्रेषुधं राज्यं करेण भावेन शैलसदृशं सज्जेतो कृत्वा निमित्तेन विशतां नीनां विषुरे भवन्तेषु मध्यमा तथोऽश्रुतं गोक्रमो धनुषो भज्यमानो शब्दोखं रोषि दिशा पुरामासु संश्रुता कंसा त्रासमुपागमत् तद्रक्षिणसानुसरा कुविता आरतायिनो जयितुरा आगता ताभिक्रमघृतां अपद्य तामिह रोटान्दुलविप्रान् विलोक्यो बलशेखवो अक्रुद्धो धन्वन् आदाय सकले यतांसु जग्नतु बलञ्च कंसो प्रतिहत्वा शालामुखाततो निशैकिमो तीरतु जगुनिगितो पूरसम्पद तद्भवद्भूतं गिरिजं निसंयो पुरवासनं तेजो प्रगलभ्यां रूपं चूमिगिरे विभूतोत्तमम् तयोर्गिरिधार्यं शैरमैश्वर्यमसमुपानकृषराम विदुगोपै पुररामा सकटं येतृ गोप्यो मुकुन्दविगमे विराजातु राजा आशा शताशिवोदिता मा मधुपुर्या भुवन् सम्पैषतां पूरभूषणो नागलक्ष्मी शीते त्वरान्नो जातकहीमंलंसि अवनीताङ्घ्री भुक्त्वा क्षीरोदशेषन उषुष्टां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितं कंसस्तु धनुषो भङ्गं रखिनां शूलैशिशोरसंगीक्षेम्य गोविन्दो राम विक्रीतं परं दीर्घप्रजागारुभीता दुर्मितानि दुर्मति बहुना चस्या वैशा मृत्योदौ त्याकरानिषु अदर्शनं सोशिरसा प्रतिरूपेषु सत्यपि असत्यपि द्वितीयेषु दैरूपं दुरिशान्तमः सिद्धप्रतिशिक्षायां प्राणघोषानुषुचि स्वर्णप्रतिख्यमञ्जेषु स्वप्नदादर्शनं स्वप्ने प्रियतः परिसङ्गो खर्गमानं दिवानं जायालेखनमालोक्यो कस्य लाभो यद्दिगम्बरा ऐशानि यद् स्वप्नजागराणि स्वपैसन् मरणसंरज्यनिद्रां लेव्यन्व चिन्तया दुष्टायां निशिकौरेभ्यो सूर्योऽभ्यासनितो कार्यामासो वैकंसो मल्लक्रियामोत्सवम् आनुषपुरुषारङ्गं सूर्योदिशागन्धिये मल्लातिचक्रेताभ्रामुषि पटाका चैतरोरणे तेषु पौरा जनपदा ब्रह्मक्षेत्रा पुरोगमा जठोपुरुषं विभूति राजानंसो कृतासन
कंसोपरिशुतो माट्ये राजवंशोपाविशन् मङ्गलेश्वरमैद्यस्थो धियेनु विधूयता भजमानेषु तुर्येषु मल्लतोलेषु तत्रेषु मल्लासुलङ्कृता स्वप्याध्याया समासत चांद्रमुष्टिकूटो सदलोस्मि ये वसु तो आसे दुप्रशांसो बलुवज्जामि बृहता ननु गोपार्यो गोपा बोधराजा समावठ निवेदिता यान्ति एकस्मिन् मनसो आविशन् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे वैयासिकां दशमस्कन्धे मल्लरङ्गो वर्णनं नामो चत्वारिंशदध्यायः श्रीमद्भागवतकृष्णपुराणे हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय चत्वारिंशदध्यायः शिशुवास अथो कृष्णरामसु कृष्णशौचो परन्तपो मल्लदुन्दुभि घोरं श्रुत्वा दुष्टमेऽप्यतु दङ्गद्वारां समासाद्यो तस्मिन्नागाविशता परिषत्कोल्यापीरं कृष्णो अम्ब प्रतिष्ठं बद्धा परिक्रमां शौर्ये समुद्यो कुटिलाननम् उपासो हस्तिपं वासामेघनाटो गभीरया अम्बस्तामि स्वमार्गं नो गज्जापक्रमो मासीरं नो चेत् कुञ्जरङ्गाज्यो नयामि जमसाधनम् एवं निर्भत्सितो अम्बस्तु कुपितो कोविदो गजं चोदयामासु कृष्णाय कालन्तामर्मोपमम् करेन्द्रस्थमविद्युतो करेणो दतरसाग्रहे कराग्राविहितो गोमु निहत्याङ्घ्रि बलीयते सोऽक्रुद्धस्तमासख्यो घ्राणदीस्ते स्वकेशवं परामृशं पुष्करेणो स्वोपलम्बो विनिर्गतः उत्से प्रकृति बलं तनुषु पञ्चविंशतिं विकसशो धनालाङ्गं सुपर्ण इवो लीलया स्वपर्जावर्तमानेन सव्याखीनमजिच्युतो बिभ्रामो भ्रानुनेनो गोपस्तस्येन बालक ततोऽभिमुखो माध्यायापानिहत्यो बालन् पद्रावनं पाठयामास सुषमानो पदे पदे स्वधावनुक्रिया भूमौ पतित्वा सरस्वतीतो तं मत्वा परितं क्रुद्धो दन्तभ्यां सोनत्कितिं सोविक्रम्य प्रत्यये कुञ्जरे धावनिमतिं सुध्यमानो महामते कृष्णमभ्यद्रवच्छुवा तमापतन्तमासद्यो भावान् मधुसूदनं निर्गीतपाणिनः हस्तं पाठयामासो भूतले प्रतेष्वपराक्रम्यो मृगेन्दु इव लीलया दन्तमुत्पाद्यो तेनेवं हस्तपां चक्रासिनधरि मृतङ्गति परार्धे सिंहूतनपानि समाविशत् आंसन्यास्तायूदन्दस्वोद्धिं वदबिम्बुभिरङ्किता दृढस्येकमनिका दलनां भूरो बभो अभृतो गोपै कतिपयबालेव जनार्दनो रङ्गं विदिशतु राजन् गजदन्त बराबुधौ मल्लानामो शरीरां नरवरो स्त्रीणां स्वरो मूर्तिमान् गोपानां समुद्रभ्यां कीटिभुजां शान्ता क्षिपतो दिशि निर्जरभोजा परिवार विवेशां तत्त्वं परं योगिनां वृषणां परजीवितां बीतो रङ्गं गतो साग्रज हतं कोल्यापीरं दृष्ट्वा तावति दुर्जनो कंसो मत्स्यपि चन्द्रो भीष्मशमाशुनिप तौरेष्टो रङ्गमजो महाभुजो विचित्रवेषाभरणास अम्बरौ दथान्नताभूतभव्यसानो मनो क्षिपन्तो प्रवया निरीक्षणां निरीक्ष्योताभूतमो जनो मञ्चयित्वा नरको नगराराष्ट्रानुपो अप्रसव्यकालेषु विषमानो वपुर्नो धृत्वा नता नतदानम् इवं चैव सखिर्भ्यालीयन्तो इव जिह्वाग्रन्थतो नासाभ्यास्त्रिगन्तो युवाहुपि उषो परस्परं ते वै यथाक्रमं तद्रूपगुणामाद्रं प्रलभ्यास्मारितायो यतो भगवतो सख्यादुधरेण नारायणेषु हि अवतीर्णो हि नंसेनो वसुदेवेषु व्यस्मनि सो वै कीलो देवक्या जाठो नितिषु गोकुलान् कालव्यसान् वसन्पुरो वयसीं नन्दव्यस्मनि पुतनानेनो नीतान्तं चक्रवातं च दानवो अर्जुनो विजगुकेशो धनुकेश शुनो तद्विधा गावोपसा गालो सवाला एतेन दावाग्ने परिमोचिता
कालियो जनितो सर्पो इंद्रष्टो विमितो वृथा सतहायेनो दीतो अविद्रज परो अमुना वर्ष बाटा सनिभ्यंचो वैत्रांशु गोकुलम गोप्यायशो नितमुदितो असितो प्रेक्षणं मुखम पैसतो विजवातापो तरन्ति स्मारतामुदा ब्रह्मणेन वंशोऽयं जरो बहु विश्वतोत्रि श्रियं यशो महन्तन्तो लेविते परिरक्षिता अहिंसाग्रसो श्रीमान् रामो कमलोचन प्रलम्बानेतो येन बस्सको विवेकवरार्यो जनश्रीरन्द्रविनयसु ऋकेषु नियतिषु कृष्णनामो संव्यासुचानुरो भक्ष्यमब्रवीत् ये नन्दसूनो ये रामो भवो भवन्तौ वीरसम्मितो निजुतकेशौ सूता राज्ञाहूतौ दीक्षा प्रियं राज्ञो प्रकृर्वन्त्या श्रेयो विन्ध्याख्यो वै प्रजा मनसा कर्मणा वासा विपरीत अत्वन्यता इतं प्रवृत्ता गोपा वसबाला यथा श्रुतं वनेषु मलविद्येषु क्रीडन्तां विभोचनगा तस्मात् राज्ञो प्रियं जूयं वयं च करवाम भूटानिनो प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृप तनिसंय सर्वे कृष्णो देशकालो अतितं वच निर्धमानो अभीष्टं मन्यमानो अभिनन्दस प्रजाभोजपतेरेषु वयं चापि वनेसरा करवामो प्रियं नित्यं तन्नो परमनुग्रह बाला वयं तुल्यबलै क्रीडन्स्याम यतोचितं भवेन्नो दीजितं मा धर्मो स्वसन्न्यावासतो चांद्रोवाच नो बालो नो किशोरष्टं बलं च बलिनाङ्गरो लीलेव भेटो हीनो यो ससाति परस्परो तस्मानो वड्भ्यां वरिभिर्नो बोध्यभ्यं नानायो सो वै मयि विक्रमो पार्ष्णेन बलेन सो मुष्टिकः इति श्रीमद्भागवतं व्यासिक्यां दशमस्कन्धे कुवलयापीरवधो नामो 347 श्रीमद्राधागुणकृष्णपितामह बल हरि बोल हरि बोल। भगवते वासुदेवाय सृष्टिवासो तच्चिंतया संकल्पो भगवान् मधुसूदनो आसाथो चान्द्रमुष्टिकं रोहिणीसुत हस्तभ्यां श्रीर्दभ्यां पद्भ्यामेव सोपादयो विकससातुरन्येषां प्रसद्योभिषया करन्तीमि अरतिरां जानुभ्यां चैव दारुणे शिरो शिष्णुरसातालो अन्यन्यो बीजघ्नतु परिभ्रामणमनिवेक परिरम्भानतुरनै सर्प नाम सर्पर्मै जै ये सैन्यन्यं प्रत्ययुजटा उत्थापनै निरुषन्न नैसारुण्ये स्थापनैरपि परस्परं जिगीजन्ता सकृरूपात्मनो तद्बलापशेन समेता सर्वदुषिता ऊषु परस्परि राजन् सानुकम्पावृथव मान्यं वदा धर्मं येषा राजा सवासरा जे बला बलवद्युद्धं राज्ञे विसंगीति पैशत को वज्र सार सर्वासौ मल्लौ शैलेन्द्र सनिधौ को जाति कुसुमारंगौ किशोरौ नप्त यौवनौ धर्म व्यतिक्रमो हास्य समाजेषु ध्रुवं भवेत् जात्रा धर्मो समुत्तिष्ठायो श्रेयं कर्मो करिषि नो सवां प्रविशे प्राहु सारसोष सारसरम अब्रुवन् मित्रो सुन्नो नरो किल्मिषो अस्मितो बल्लभो सगुणावाक्यो कृषिषु वदनाभुजं वीक्ष्यन्तो क्रमणावाक्यां पद्मकोशां बाम्बुभिः किङ्वसितो रामेषु मुकुन्दाम्रालोचनं मुष्टिकं प्रतिरामरसंहाससंरम्भ शोभितं पुण्यावृतो वृषकसाधियं नालिङ्गो पुराणपुरुषो वनः चित्रमल्य गापालयन् सबलो कनयांशु वेणुं विक्रियन्ते सन्तति गीतमावृङ्किरंहि गोप्याशवो किमचरन् यद्भिल्लो बलो लावण्यमुषकारं सिद्ध्यं दिग्भिः पिबन्तं सवासनं दुरापमे अवन्तायो जशस्वस्यो ईश्वरस्य जातो अन्यनापने अवधने पलेपन प्रंसदा प्रतिगालुचार्जुनु गान्ति सैन्यावतार शोधितेषु सुगन्ध्या ब्रजो भ्रष्टियो गुरुकमचित्तसाना प्रातर्वदाजगुवा विषद्वा सायं गोपी समङ्कारेषु निशिन्नवेणु
नैवतुर्वशं पथि पुण्यरादिभिः सस्मिन्मुखं सदयावलोकम् एवं प्रवासमानसु स्त्रीषु योगेश्वरा हरिः सक्रं हन्तु मनश्चक्रे भवान् भर्तृषभा सभया श्रीगर्भिश्रुता पुत्रस्नेहामराच्युता पितरा भवाचोटां पुत्रमायुर्गुरुबलं तैस्तैर्नियुद्धा विधिर्विधरच्युतो युधास्य यथादेशं तथैव बलमुष्टिकौ भवत् घाटनिस्पाठै भजनिश्वेतनिश्वरै चानुरै भजमानाङ्गो मुहुर्ग्लानां विवापवः सोऽसेनवेषो उत्पाट्यो मुष्टितो करम्बुजो भगवन्तं वासुदेवं क्रूर क्रुद्धो वैक्षिसधावत नासो तत्प्रहारेणो मालाहतो इवोदिको भानिजुषानुरं भूषो ब्राह्मयन् हरि भूपृष्ठे पोठयामासो तरसा क्षीणजीवितं विसृष्टा कल्पकेशा सविग्रध्वजो इवापतत् तथैव मुष्टिको पूर्वं श्वेतार्हतेन वै बलवद्रेण बलिना तलेनाभियतो वृषं प्रवेशित सुरुधीर क्षीरमण्डलमुकुटो अद्यको व्यासु पपातोर्व्यूपध्ये व्याजो इवङ्घ्रितव ततो कूट मनुप्राप्तं रामो प्रसन्नावरो अवलिल्लया राजन् सविज्ञं वाममुष्टिना तद्धेव हि सलो कृष्णपाठः पतो शेषको दीर्घावीर्णपूजाको वापी निपेततो चानुरिमुष्टि कूले सनेतो सलकी हति जे शेषा प्रदर्मल्लकाबल्लो प्राण परुषव गोपान्वेषानाकृष्टैः संश्रितो विदधतो भज्यमानेषु तुर्येषु बल्ललो तनूपुरो जना प्रजजु सर्वे कर्मणा रामऋषयो दीतो कंसो विप्रमुख्यो सारभो साधुशब्दिति अतीषु मलयुद्धेषु विकृतेषु जो भोजराट् निवादयत् ससुराजानि वाक्यं येदमुवाचः निसारयतो दुर्वृतो वसुजापजो पुरा धनं हरतो गोपानां नन्दं दध्नीतो दुर्मतिं वसुदेवस्य दुर्मेधाहनन्तरामासतु उग्रसेनस्य पिता सापि सानुगो परपक्ष्यगौ एवं वितमाने वैपक्ष्ये वैकंसे प्रभृतिभ्य लयोत्पाटोत्तरसा मंच तुंगमारुह तमाविसंजमालविक्यो मृत्युमात्मवासनात् मनसि सस्वठायुर्दगृहे श्रीचर्मणि तंखृगपान् विसर्शासु सेनु तथा दक्षिणामध्ये समग्रेन्दुर्प्रायु तथा तर्षूटो प्रसज्य प्रगितो केशेषु चलकीतं निपत्यो रंगोपरि तुंगमंगान् तैशोपरिजी स्वयमात्मजो भवाटो विशसायो आत्मतंत्रो तं संप्रेतं विसर्ज्य भूमौ हरिजतेनो जगतो विपश्यता हा हेति शब्दो सुमहातातु दूरितरूपो सर्वजनै नरेन्द्रो सो नित्या दोष विघ्नात्मसन पीवसन वा विसरन् अपरन् ससन दशचक्रादियामति जलस्य देवो रूपं दुराबाफमाफो तैशानुजा भ्रातरोटो कल्कनेशा गोग्रवद्या अभ्याटवनिक्रोधो भ्रातु निवेश्य कर्णिगर तथा तीरसमासंचो संवर्तान् रोहिणीसुतो आसन् परिधर्म्यो पशूनि भूग्निकाटिको निर्दुर्गव्यम्नि ब्रह्मसैद्यो विभूतया पुष्पै किरतस्थं प्रीत्वा संसनतिनुष्यं तेषां शिव महाराज सुमहन् मरुदुःखिता तत्रासि विभूषाबुद्ध्य च कृष्णानु सुविलोचना शयानान् वीरसज्जायां पतिनानाङ्ग्यो शोचितं विलेपु शोषणानार्जा विसृजन्तो मुहुषुषो हा नाथो प्रियो धर्मज्ञो करुणाथाप्यो जलो त्वया हतानि यथा भयन्ति स्वप्रियो प्रजा त्वया विरजापत्या पूरियं पुरुषसपुर्नो शुचे भयन्निभो निवृतो सर्वमङ्गला अनाशां त्वां भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्लनं तेनेवां भूदशाङ्गितो भूतभूको लभेतसं सर्वशापि भूतानाम् अशेषो मेषो हि प्रवप्यो गुप्तात्र बध्नाति कोकासि सुखमेध्यसे शिशुवासो
राजजोषितो आश्वज्यो भगवन् लोकमलापो जामाहुल्लोकीं संस्थां भूतानां समकायत् मातरं पितरं चैव मोचामाशुवर्धना प्रसुरामो भवन्दाते शीर्षा विश्वपार्यो देवकी वसुदेवं च विज्ञायो जगदीश्वरौ कृतसम्बन्धनौ पुत्रौ स्वसुजातो नो सङ्गितौ इति समर्भाटमापुराणपारसंवैयासिक्यां दशमस्कन्धे कंसवधो नामो चतुश्चत्वारिंशद्ध्यायः विस्मृतार्हा गोलकृष्णप्रचानन बल हरि बोल हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। परिचत्वारिंशद्ध्यायः श्रीवासु पितरापो लब्धार्थो वीत्वा पुरुषोत्तम मां पुरीति निजां मायां तत्तानो जनमोहिनी वाचो पितरारातिरो सागरजो सरदर्शभो प्रसानावृतो प्राणायां तातिरि सादर न सत्यो जुयोस्तातो नैतिकाशुतोरपि भल्याकुंड कौशो दत्राना भूयो कचि मूडब्धो देविको वृतो नो भवन्त दिगे जांपारा पितिज्ञासु विदन्ति लालितामृतम् सर्वार्था समवो देवो जनितो पोषितो जता नो चोर्जातो निर्वेशं तेर्मर्त्या शताविधा दस्तयोरात्मजो काल्या आत्मनानो धनेषु वृतनो दद्यां चेत्या समासं खादन्ति मातरं पितरं वृद्धं वरदां सद्यं सुतादिषु गुरुं विप्रं प्रबन्धसु कल्यो न विभ्रमा स्वसन्मृतः तन्नाम बकल्यासो कंसा नित्यं विघ्नचेतसो मोहो येतो व्यतिक्रान्तो दिवसा बाहुन अर्चते तर्खन्तु अर्धष्टातो मातन्नो परतन्त्रतो अकुर्वती पां शुश्रूषां दृष्टयो लीलावशं शिशुवासो इति मायामनुषेषु हरेर्विश्वावनो गिरो मोहिता बल्कलोरप्यो परिषज्जाप तूमुदम् चिन्तन्त्यापकृतो राशि स्नेहपाशेन चावृतो नो किञ्चित् धनुराजन् सम्पकन्थौ विमोहितौ यमाश्रयस्य पितरौ भावान्तिविषुतो माता हन्तु वृषेणं ददु मकरन्दोन्निपः आओ तस्मान् महाराजो प्रपञ्चाति मृषि ददाति शापान् बुद्धिर्नो परितानां निपृच्छति मयि प्रीतमुपासने भवतु विधार्यो बलिं हरन्त्या शापरे कुमुतन्ये नराधिप सर्वान् स्वान् यादिसम्बन्धा दिव्यो कंसो भयाकुलान् दरुदृष्टान्धक मधुभासारो कपुरादित्यकान् समादितान् समानज्यो विदेशान् अश्रिकर्षितां निवेदेषु ते सन्दर्भिषि कृष्णसङ्कर्षण भुजै युक्ता लब्ध मनोरथाग्रेषु निरे सिद्धा कृष्णरामो गतोत्तरा वीक्षन्तो व्यराकाटा प्रीति मुकुन्द विलम्बजं जं नित्यं प्रमुदितं श्रीमत् सदया स्मित वीक्षणम् तत्रो प्रवयवो सत्यान् युवानोति बलिजो पीबन्तो कुण्डेषु मुखाम्बुजजुषुरामृदुमुः अथो नन्दं समासज्यो वा देवीसुतो सङ्कर्षणो राजेन्द्र परिषज्यो मदितिरो पितर्यो राज्यां स्निग्धैव्यां पोषितो लालितो विषं पितुर्व्यथितो प्रीति आत्मगोपासति सोपिता सासु जननी तौ जौ पुष्टितां सुपुत्रवत् शिशुं बन्धुपीडोत् सुकान्तकल्यापोषे रक्षणे जाडुयं मृजोटाटं भयन्तो स्नेहदुःखितां ज्ञातिन्वोदस्सु मत्स्याजो विषायो श्रियां सुखम् एवं सन्तेषु भवन्नन्दं सोऽभृतमच्युतो वासोऽलङ्कारो कुप्यध्ये जयामासो छादरम् एतस्य परिषज्यो नन्दो प्रबलद्विहुलो पुनराससूच्य अपद्याभिनेत्रे सौ गोपे भृतं दितो अथो सरसितो राजन् पुत्रज्ञो मकरारे
पूर्वशा ब्रह्मवेशो यथादिव्या संकृति तेभ्यो दक्षिणा आरोपमाना संकृता संकृतिभ्यो संपूज्यो सुवर्षा थोनमालिना जा कृष्ण राम मधो दत्ता महामती ताम्यख्यान स्वीता कंसेना धर्मटोदिता त्रिशूलेश संकारो दीजितम प्रभुसुतो गर्गार दिरुकुलाचार्यो गातं व्रतमासितो प्रभु सर्वनामाशय सर्वजो जगदीश्वरो नद्यास जानो ज्ञान गृहवानो नवीहिते तो गुरुकुले वासनि संत्या भूपरिगुरु कैसन सन्निपन्नं नामो देवतिं पुरवासन यथो प्रसाद्यतौ दन्तौ गुरौ वृत्तिमनन्दितौ ग्राहयन्त व्युपतेषु स्मो भक्त्या देवमिवाबभौ तयोर्यावर सन्तुष्टो शुद्धभावानुतिगिरिवासो वेदामखिलां सङ्गो उपनिषदो गुरु सरैषं धनुर्वेदं धर्मान्यापराजितरासिद्ध्यां या विद्यां राजन्यो सविषां सर्वं नरवपुश्रेष्ठं सर्वविद्या प्रवर्तको सपिन्नियमिक्रम्यानतौ संजयेतु अहोरात्रिस्वादो सन्तोषो तावतिकला गुरुदक्षिणाचार्यां संज्ञामासनिको धीजयोष्टं महिमानमद्भुतं सकलं राजनमधिपतिं सन्मन्त्रोपत्न्या भाण्डवेमृतं बालं प्रवासे वेषामुपो दैत्यविजय महारथो रथं प्रवाहनमासाय दुरन्तविक्रमो वेलामुत्वज्यो निषिदितो क्षणं सिन्धु समहनातयो तमाहो भवानासु गुरुपुत्रो प्रसीदां सुनिवासासु तयाग्रस्ता बालको महतेर्मिनो ये समुद्रवासो नैवाहार समुदैते पंचजनो महान अंतर्विदर्शरो कृष्ण शंकरूपा धरो धरो आशीतेनारितो निजंत सूतातुरावे जलमाक्षतां हत्वा नापिशातुं भारवकं तरङ्गप्रभं शङ्खमादायो समागमम् तरो संजमनी नामो संजमनी दिव्यां पुरीं गत्वा जनार्दना शङ्खं गुरुजौ सह लायुधौ शङ्खनिर्हारमाकर्ण्य प्रजानं च जमोजमा तयोः सपर्जामतिं चक्रे भक्त्या पूर्णितं उवाच वरतो कृष्ण सर्वभूतात्मशालयं लीलानुग्रहादीतो जुवयो करवाम किम् श्रीभन्वासो गुरुपुत्रामिहानीतं निजकर्माभिनिशम् अजाननस्व महाराजो मत्साधनपुरस्कृतः तनितीयेन गुरुपुत्रावतं दत्त्वा सा भूयो मरणातितमुषु गुरुवासो सैन्यप्रलाश्रवसो भव्यां गुरुनिक्रमो कोनो जीवेतो कामानि शिश्रे गच्छतं शोभ्यं वीरो कृतिवामन स्वभावनि सन्धांसजातानि भवति परित्राय गुरुनैव अज्ञातो दशेनानि रङ्गस आयातो सोपुरं तातो पर्जन्यानि देवै समनन्दन प्रजा सर्वा दृष्ट्वा राम जनार्दनो अपि सन्त्या भवानी नष्ट लब्धगणा इव जिसमें बाढ़ में अपना पयासिगाम दशमस्कंदी गुरु पुत्र आने नामो पंचचत्वारिंशध्याय स्मृतारः गुरु स्मृताने बोले हरि बोल हरि बोल। सर्वत्वान् सज्जा विश्ववासो कृष्णां प्रभुमन्त्री गृहीशो दयधूपरिशिशो बृहस्पति सख्यादुद्धोपदेशतम तमाहो भवान् प्रसन्न भक्ति कान्तिकं यदि गृहीत्वा पाणिनापानि प्रसन्निजमोरि हरि गशद्रवं भुजं सौम्यो पितुर्मो प्रीतिमाभा गोपीनामद्योगिनां सन्ध्यो सर्विमोचयः तामनस्कामत प्रमाणं जे त्यक्ते दैकामाय भूतेजं पृष्ठात्मानं मनसा गता जे त्यक्ते मलो धर्मं वदस्य तान् विवर्म्यहं महिता प्रश्नं पृष्ठदूरस्य गोकुलस्य स्वयन्तेव विमुच्यन्ति विरहा कौण्डिविवला जांसति अशिषेण प्राय प्राण कथञ्चनु
प्रजागमन संदेश विकल्प मां मदात्मिका श्रीवासो जितो ढवोराजन संदेशम वसुरादयो आदाय समारुद्यो ब्रजो ननुगोकुलम प्राप्तो ननुग्रहं प्राप्तं निम्नोषधि भावे संयामाज पुरुषतां पशूनां पूरदेनुवि भाषितार्थे विवितार्षे विदितं सुशिवारणं धावन्ताविशो व्यग्राभीरचरुरा शवसकान् इतसुतो विलङ्कैशोरोऽपि शीतो प्रादेशानुवार्थं वेणुनाम्नि सन्येन्द्रनस गान्ति विश्वकर्माणि शुभानि बलकृषयो सुलङ्कृताभिः गोपीभिर्गोपेशो सुविराजितम् अग्नर्काटिः गोविप्रा पितृदेवार्चनासिने धूपदीपैषु निविशमल्लाटे गोपालै सममार्यम् सर्वतोपशिवदवनं पुष्पिता दिजालीककुलादिभिः हंसकारं दशकिरणैः पद्मकोशारिगणे मनितं तमागतं समागत्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दो प्रीति न्यपीडमनिशाप्यो वसुदेवाधियार्थे भोजितं परमाप्येन संविष्टं कशपूषकं गतश्रमं परिदपृशन् पारसंवाहनादिभिः इति संगो महाभागो सखानो सुरनन्दनो आस्ते कौसल्यापत्याद्यै युक्तो मुक्तो श्रीवच दिष्ट्या कंसो हरपापो सानोगासीन पापना साधुनां धर्मशीलानां गञ्जैषणां दशिभो यथा अपि स्मृति नो कृष्णो मातरो श्रीदिभिरः गोपान् ब्रजकञ्चानां गावो वृन्दावनं गिरि अप्येषा गोविन्दो स्वदनान् स्वकृदिभ्यो तरिरक्षा भावता सुशनं सुपेक्षणम् दावाग्निर्वाट वर्षासु विश्वासु रक्षिता दुर्तेभ्यो मृत्युभ्यो कनकृष्णेनो समार्पणा स्मरतां कृष्णबिरजानि लीलापाङ्गविस्मितां हितं भावसङ्गम सर्वानोषि खिलाक्रिया सरिसलबलि दोषानुकुन्नो परमसुरन आखिरभ्यां नानुमनोजाति तरात्मतां मन्ये कृष्णचरामंश प्रकाशो श्रुतौ सुरानामदर्थायो ग्रहीषो वचनं यथा कंसो नागायुतप्राणं मल्लौ गजपतिं यथा अपरिष्टं लीले गोपशूनि वो मृगाधिपा तालत्रयं महासारं धनुर्षष्ठी विवेशरा भवञ्चैकेनो हस्तेनो सप्ताहमवगाद्गिरिं प्रलम्बो धेनुका अरिष्ठ तीर्णावर्तो बकारे दैत्यासुरारूपजितो हत्वा जैने हो लीलया शिशुवासु इति संस्थितो नन्दा कृष्णा अनुरूपा अच्युत्कण्ठे अवत्कृष्णिं प्रेम प्रसरविहुलौ यशोरावर्ण्यामासु भूतेषु चरितांशु सुनन्ता सविनाशाखी स्नेहस्यूतपयोधरा देवथितं भगवते कृष्णे नन्दगोशोभयो दिशानुरागं परमो नन्दमहो देवमुदा श्री उद्धवासु जुवां सज्ञतमनूनं येनामि होमादो नारायणे अखिलगुरौ जल्पितो मति ऋषि यतो हि विश्वजोनि रामो मुकुन्दो पुरुषो प्रधान अधियो भूतेषु विलक्षणेषु जानेषु देशान् इमौ पुराणौ अस्मिन् जनो प्राणभिगमौ खनौ आविशो मनो वियुद्धं निर्गिजो कर्मणामाशु गिरो पुरीं भ्रमयोर्कर्षण तस्मिन् पिमटाखिलमात्मो नारायणे करमेति मृतौ तावत् विजतो नितरां महात्मनो किं भावो विष्टुभं जुवयो सुकृत्याम् अर्घमिध्यादिगण्यकालेन बलिमसितप्रियं विदशति पितृर्भावान् भूततां पति अथवा कंसंरंगमेभ्योऽपितं सर्वस्वतुताम्बराहो वा समागो कृष्णे शैत्यं करोति चेत् मा खिद्यतं महाभागो दक्षं कृष्णमन्दिके कृष्ण अन्तर्हिदिशो भूतानामते ज्योतिदैवासि दज्जस्माभिः प्रियं कस्मिन्नामो वास्तुवामिनि नोभजे नारदेवापि समन्यस्यामोऽपि वा नो माता नो पिता देशो नो भ्रातु नो सुरादयो नाग्नियो नो परशापि नो देहो जन्मयो वा योषो नो सैषा प्रणवालोकी सदसन्नि राजसं क्रीडात् सोऽपि साधूनां परित्रणाय कल्पते
सत्यम दृष्टमो इति भजते निरुदे गुणानुभूतिरमणियामो गुणैः सीजमटपिरो हन्तथा यथा भ्रमरजिष्टाङ्कुर्भवति वो चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्ते वयं गिरादिस्मिता द्वयोरविनादात्मनो भावान् हरि सर्वेषामात्मविद्यत्वा पिता माता सो ईश्वरा दृष्टं श्रुतं भूतं अव्यभिस्वादस्निशाचरी वकञ्चो विनानाचितोतरां नो वाच्यां सोये वो सर्वं परमात्मभूत एवं निशासा ब्रुवोर्विदितानन्देषु कृष्णानुसरिसुराजन् गोप्या समथा निर्विता दीपान् वस्तुन् समर्पितत् जविन्यमानमन्थन् ता दीपदीप्तिनो सेजो वीर्यजो विगर्षम्भुजो वत्सज चलन्नीतम्ब सौको कुन्दलवस्त्रकवसागस्नानना उद्गाति नाम विजतो लोचनं व्रजाङ्गनानां दीमस्पृशद्धनि दध्नंसो निर्मन्थेन मिथिता श्रीशजेनो दिशा मङ्गलम् भगवतो तमादिते नन्दद्वारे भृगुसोदृष्टारथं सारकं भों कैश्यायमीति चाब्रुवम् अकुआगतं किं वाचा कैशारदजेनो नीतो मधुपुरीं कृष्णं कमललोचन किं साधयित्वामीति भरतो प्रदेशो निष्ठितं ततो स्त्रीणां वधीस्त्रीणाम् अवघात् पितान्धिका इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमहंसवैयासिक्यां दशमस्कन्धे उद्धव जानम नमो नाम चत्वारिंशोऽध्याय श्रीमद्राधागुरुकृपितानंद बोल हरि बोल हरि बोल। Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda